Mic check, mic check, mic check. This is a test. This is a test. Hello, guys. What is up? Today I'm back with another video, and in this video we're gonna rant about a data structure called graph. आपने रिश्तों के तो रूप बदलते हुए देखे होंगे, बट कभी किसी डेटा स्ट्रक्चर के रूप बदलते हुए नहीं देखे होंगे. बट दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर. आई होप एवरीथिंग इज विजिबल. स्क्रीन के राइट साइड में you will be able to see the graph that we are gonna write code about today, and I'll be explaining you why मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, why this data structure is most the worst data structure in terms of understanding. Actually, in reality, when I'll talk about its functionality, so graph is a very good data structure. इसकी बहुत ही versatile होता है, and in computer science we use in various places, but for its implementation when you're working on problem solving, इसकी implementation बहुत दिमाग खराब करने वाली होती है. ये तरह तरह के रूपों में आता है. So we're gonna talk about some of the representations of graph and how they are represented in the code. So I'll be using JavaScript, but almost सारी language में सारी तरीके से representation होगा if you want to change the language as well. So the very first representation that I want to talk about is the edge representation. Now, what happens in edge representation now? So for example, if we have in this in the right side, you can see we have an edge from in the directed one. So first we'll talk about the directed one. We have an edge from A to B. So for every edge we'll have a array of array in which one array inside that array will represent edge from one element to another element. So for example, let me write const edges is equals to, so this is the array inside which we'll have array of two elements, multiple array of two elements representing the connection between one edge and one node and another node. Okay, so for example, this is, we have one of, for the very first we have one from A to B, so this is gonna be one, then we have B to C, then we have A to C, then we have B to D. So this is the representation for the edge, and this is the edge representation for a graph. So ये technically not technically, even ये बहुत ही खराब representation मानी जाती है. This is almost not usable. इसको whenever we are writing our code into edge representation में, अगर आपको input में वाला ये दिया हुआ है इस type of representation, you have to convert that into the next representation that we're going to talk about, which is dictionary representation, or you can say key value representation, in which I'll show you in a minute. So if I'll talk about this only, this particular representation only, in case this is what I wrote. This is for a directed graph. So in which we have we can assume, right, the first element is the starting element and the second element is the destination element. So this edge means our graph is starting from A and ending on to B, and for this similarly from this B to C. When in case of undirected, the question the good thing is that the question mention कर देगा तुम्हारी starting में कि if it will be directed or undirected, but you have to treat it like the same. So in case अगर ये undirected होता, so A comma B should not mean that A B पे जा रहा है, तो it would have been a two-way relationship A और B के बीच में. But yeah, this is the edge representation. एक बहुत ही बेकार representation है. This most of the time हमें इसको convert करना पड़ता है. इस पे directly काम करना बहुत difficult होता है. Second representation we are going to talk about is the dictionary, right? So uh, in dictionary representation, what we have is that we have either a dictionary. So for example, right now in this case, the graph that we currently have, I have not mentioned this graph. The elements like the node are representing alphabet, right? A B C D. But in case अगर आपके nodes, just in case आपके nodes elements mention कर रहे हो starting from 0 to n, if you have that kind of problem, so instead of a dictionary you can use an array. तो वो इस type का हो जाएगा. Graph is equals to, so for example A की जगह हमारा 0 होता, so A is going to B and C. I'm talking about the directed one. So A is going to B and C. So our first, the 0th element would have been B and C, right? So similarly, B is going to only D.
So our second element would have been D only. That if you treat B as 1, if you treat C as 2, our third array would have been empty because C start तो हो रहा है but कहीं किसी पे point नहीं कर रहा, and D भी हमारा किसी पे नहीं, sorry, C हमारा B पे point कर रहा है। ओहो रुक जा मेरे भाई, C हमारा भी B पे point कर रहा है एंड D हमारा कहीं point नहीं कर रहा, तो इट वुड हैव बीन एम्प्टी। सो ये है तुम्हारा डिक्शनरी रिप्रेजेंटेशन। बट इन केस फॉर एग्जांपल अगर हमारी एबीसीडी ना होता, हमारी ये वैल्यूज होती इंटीजर 0 to 1, देन हम विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्सेस हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जांपल ये 0th एलिमेंट, राइट? सो फॉर 0 कितने पे जा रहा है तो हम एट द 0 प्लेस हम एक एरे बना देंगे एंड व्हाट एट विच एवर नोड इट इज गोइंग we'll just add it inside this array. Similarly for first, second, but in this case ऐसा नहीं हो रहा। जो हमारा ग्राफ तुम देख रहे हो राइट साइड में, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। दिस कंटेन्स स्पेसिफिक एलिमेंट्स, दैट मीन्स ये अल्फाबेट्स हैं, बट तो ग्राफ अरेज में हमारे इंडेक्सेस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं होते, तो वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर दिस। सो डिक्शनरी, इफ यू नॉट नो dictionary, we call it in Python, hash map you can call it in other languages. So yeah, it is like a key value data structure in which we have a key which represents a which through which you can get fetch some value. So for example, if we talk about a element, the first node a is going to B and C. So will for the key a, this is the key and this is the value. For the key a, the elements it is going to is B and C. Similarly for B, add a comma. Similarly for B, it is going to only D. Similarly C is going to only B. So and D is going nowhere. So it is empty. So this is the key value representation. Or in this most of the time, like जो भी mostly questions you will face in graph, most of the questions will have this representation only and it will use this representation only. This is the most efficient way to represent a graph according to me, because इसमें हमें डायरेक्ट रिलेशन पता लग जाते हैं एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट की वजह से। इफ यू इवन इफ यू हैव टू ट्रेवर्स दिस, सो मेरे को किसी तरह का ट्रेवर्सल करना है, लाइक बीएफएस डीएफएस कुछ भी, सो इट इज वेरी इजी इन दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर। तो ये काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज व्हाट आई लव, ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। एवरी टाइम व्हेन आई गेट द अर्लियर रिप्रेजेंटेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट, द एज वन, मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। इट इज वेरी इजी, बहुत ही शॉर्ट मेथड है कन्वर्ट करने का। यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। ओके, so this is the second representation. This is the directed one that I told. Undirected में it would have been like B में फिर ये A भी add हो जाएगा, because B is pointing to all three, तो B हो जाएगा B A C and D. So directed and undirected के हिसाब से ये representation काफी चेंज हो जाएगी, because there is no pointer now. So B A को भी पॉइंट कर रहा है, C को भी पॉइंट कर रहा है, D को भी पॉइंट कर रहा है, बट इन द डायरेक्टेड वी कैन क्लियरली सी, राइट, B सिर्फ D को पॉइंट कर रहा है। सो आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ third representation that I want to talk about, third representation, right, it is so if you have worked on trees and linked lists, so you know, right, we represent linked list nodes and tree nodes in a form of objects or function objects in case of JavaScript. So you have to do something like, right, function, and then you have to create a in other languages you create a class and then you create object out of that class. But Java हमारे में class नाम का कोई वो, JavaScript में हमारे class नाम का कोई concept ज्यादा होता नहीं है, it's function constructor only. So हम इसको function के through बना रहे हैं, but in other language it's through class. So function is equals to one node, and node will have node will take a value, and in node will have this the value which we will set it to the value that we'll receive while creating this object, and then we'll have neighbors. Okay, and neighbor will be an array. क्या हो गया मेरे भाई, sorry. Oh, okay, so neighbor will be an array. Okay, so this is the blueprint of the node that will create. And to establish relations between two nodes, what we will do, so for example, let me check, let
वन नोड, फर्स्ट नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड एंड इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे 1 एंड लेट 2 इज इक्वल्स टू न्यू नोड एंड इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे 2. So now how would I know that edge is starting from 1 to 2 is that अगर मैं 1 के ऑब्जेक्ट के नेबर एरे में 2 को ऐड कर दूं देन विल नो कि 1 का नेबर 2 है एंड इन दैट केस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू आर डीलिंग विद इन दिस केस अगेन यू कैन सी दैट डायरेक्टेड डायरेक्टेड में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ए और बी वाला हम एग्जांपल लें तो इफ वी लेट मी चेक ये वाला अच्छा एग्जांपल हो जाएगा ए और बी राइट. So sorry, not which go as a string, yeah, right. So इस वाले केस में क्या होगा इन केस ऑफ डायरेक्टेड सो हमारी एक ही एज जा रही है ए टू बी. सो व्हाट वी विल डू वी विल add a dot neighbors a dot neighbors dot push एंड इसमें हम पुश कर देंगे b. सो वील नो नाउ जो a ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो नेबर वाला जो एरर होगा उसके अंदर होगा हमारी वैल्यू b और b is not just a string, it's a object in itself. So we know now if you want to traverse from b we'll just take out the b element from the neighbors array of the a. So we know that there is a relation between a and b and edge is going from a to b. Similarly अगर ये undirected graph होता तो इसमें ऐसा होता कि बी के अंदर भी ए का एलिमेंट होता तो सिमिलरली एक लाइन और ऐड हो जाती बी डॉट नेबर्स, मैंने नेबर की स्पेलिंग गलत लिखी है शायद, हाँ, डॉट पुश डॉट ए. नाउ ये हो गया अनडायरेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. तो ये हम ए को बी को ए में बी को हमने ए के नेबर में डाल दिया और इस ए को हमने बी के नेबर में डाल दिया तो ये एक दूसरे का ऑब्जेक्ट रेफरेंस अपने नेबर एरे में ऐड किए हुए हैं. So we know that this is an undirected graph, so we can go from A to B, B to A anytime. So this is how you represent it in the third form. ये तीसरा फॉर्मेट है. That's why I was saying कि इसके रूप बदलते रहते हैं. ये तीसरा वे है we can represent graphs. Now there is one more way. It is which is different from all these three. So इसमें हमारी ये इधर वाली पिक्चर यूज नहीं होगी. So the third way is the matrix representation. Now matrix representation if you know right. In a lot of questions you will also get a matrix. So matrix में एक चीज हो जाएगी कि your graph will not be like random. ऐसा नहीं होगा कि A में इतनी एजेस जा रही है B में इतनी एजेस जा रही है. वो हमेशा एक undirected graph होगा. That means you can travel from any element to any element and each element will always have either 4 or either 8 neighbors. And वो मैं कैसे बता सकता हूँ I'll try to draw it. यार मैंने कोई ड्राइंग वाली नहीं खोल रखी. Let me open one node guys, or let me open paint. No, there's nothing better than paint, right? So sorry guys, ये recording की वजह से थोड़ा slow चलता है but हाँ, bear with me please. Okay, so our graph is defined something like this, right? So now यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होता है. फॉर एग्जांपल 3x3 का हमारा ग्राफ है तो हाँ ये दिस इज द मैट्रिक्स. इसमें कोई भी एलिमेंट होता है. फॉर एग्जांपल टेक 0 ओनली. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एलिमेंट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम बस यहाँ पर ले रहे हैं राइट 0,0 0,1 0 सारे एलिमेंट 0 है. नाउ विद द हेल्प ऑफ आई एंड जे, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है. with the help of if you are at 0 0,0 you can go to 0,1 and 1,0. So in if this is being represented by I, j हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर नोड के एड्रेस बता रही है. तो फॉर 0,0 if I want to go to the right neighbor I'll just add 1 to the j. So if I'll add 1 to the j I'll get 0,1. So I traveled from here to here, right? Similarly if I want to go down, हम लोग बैक और अप नहीं जा सकते. ये होता है क्योंकि वो तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. बट हम लोग राइट और डाउन जा सकते हैं 0,0 से. सो इन आई वैल्यू आई एड 1. सो 0 + 1, 0. So ये हो जाएगा 1,0 and for with that we have reached this element. So this graph if I want to represent it would have been something like this. ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा.
और इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स वाले ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, इसमें बीएफएस डीएफएस सारी लग जाती हैं. सो इट वुड हैव बीन सम ग्राफ ऑफ दिस काइंड. राइट, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पेंट में. तो ये एक नोड है, इसमें टोटल 9 नोड्स हो जाएंगी और सारी हर एक नोड के 4 एलिमेंट है. नाउ इसमें हर एक नोड के अभी इसमें 4 नेबर है, बट इसमें हर एक नोड के 8 नेबर भी हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हम 1,1 पे हैं. सो 1,1 में अगर मैं आई में 1 ऐड कर दूं, आई में 1 ऐड कर दूं एंड जीरो जे में कुछ भी ऐड ना करूं, तो ये हमारे हम यहाँ जा सकते हैं. राइट में अगर मैं आई में कुछ भी ऐड ना करूं और जे में एक माइनस कर दूं, तो हम यहाँ एक स्टेप बैक जा सकते हैं. अगर मैं आई में एक ऐड कर दूं एंड जे में कुछ भी ऐड ना करूं, तो हम नीचे जा सकते हैं. अगर मैं आई में एक माइनस कर दूं और जे में कुछ भी ऐड ना करूं, तो हम ऊपर जा सकते हैं. तो ये हो गया 4 वे इसका कि ये चारों साइड मूव कर सकता है. नाउ इन एक केस इसमें ये भी बन जाएगा कि ये इसके 8 नेबर भी हो सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो 1,1 पे है, लेट मी टेक रेड वन है, तो हमारा 1,1 पे राइट, इसके 8 नेबर है एक्चुअली में. बट राइट नो जो मैंने पिछली रिप्रेजेंटेशन बात की उसमें हम सिर्फ 4 वे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम आई और जे में इंडिविजुअली एलिमेंट 1 ऐड या रिमूव कर रहे हैं. बट अगर हम आई और जे में दोनों में वन ऐड कर दे, तो हम डायरेक्टली यहां से यहां मूव कर सकते हैं इस वाले एलिमेंट पे, इस वाले पे. अगर मैं एक आई में ऐड करूं और जे में एक रिमूव करूं, तो हम यहां पहुंच सकते हैं इस वाली पे. सिमिलरली वाइस वर्सा, जे में ऐड करूं आई में रिमूव करूं, तो हम यहां पहुंच सकते हैं. एंड दोनों में जे आई में भी रिमूव करूं एक और जे में भी एक रिमूव करूं, तो हम यहां पहुंच सकते हैं. सो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन. तो 4 वे मूवमेंट भी हो सकती है इसमें, 8 वे मूवमेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू. एंड दिस इज द लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ. ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. तो आई टॉक्ड अबाउट 4 रिप्रेजेंटेशन. वन इज एज वन, in which only edges are given, only the array of array inside the one array is representing one edge. It is given. You have to convert that. Most of the times you have to convert that into the other representation, that is the dictionary representation. Second is the dictionary representation, which is the most used one. Third is this representation that I talked about. This is the object representation. Normally this is how we represent linked list and tree nodes as well. And fourth is the matrix one that I explained you right now here. मेरी drawing बहुत गंदी है, I'm sorry again. Okay guys, so this was it. This is what this video was about. हमारी एक ये बहुत ही मैंने कहा था कि बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर होता है ग्राफ, इसमें बहुत तरह तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है. So yeah, that was it. I hope you liked the video. Thanks a lot. Bye.